بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9th کلاس کمپیوٹر سائنسز ہم لوگوں نے آج چیپٹر نمبر 3 سٹارٹ کرنا ہے۔ چیپٹر نمبر 3 جو ہے وہ نیٹ ورکس کے بارے میں ہے۔ نیٹ ورکس کے بارے میں ہم لوگوں نے پہلے کبھی پڑھا ہو تو کمپیوٹر کی ڈیفرنٹ ڈیوائسز کی آپس میں جو کمیونیکیشن ہے ہمارے پاس وہ نیٹ ورکس کہلاتی ہے۔ جب ڈیفرنٹ کمپیوٹرز ہمارے پاس آپس میں مل کر کچھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ڈیٹا شیئر کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں اس کی کمیونیکیشن ہو رہی ہے، اس کو نیٹ ورک کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نیٹ ورک کی بات کرتے ہیں تو کمپیوٹر نیٹ ورک کہتا ہے اور ڈیلی لائف وی یوز کمپیوٹرز ٹو براؤز دی انٹرنیٹ، سینڈ اور ریسیو ای میلس، پلے آن لائن گیمس، واچ آن لائن ویڈیوز، ڈاؤن لوڈ میوزک، ٹیک آن لائن کورسز، read daily newspapers, etc. All such activities require a computer connected with some other computers to make a computer network. They can be linked through a wire or wirelessly. A communication medium connecting multiple computers is also called communication channels. سو جن ڈیوائسز کے تھرو، جن میڈیا کے تھرو، جس چیز کے تھرو بھی ہم لوگ ڈفرینٹ کمپیوٹرز کو آپس میں لنک کرواتے ہیں اس کو ہم کمپیوٹر میڈیم، کمیونیکیشن میڈیم یا پھر ہم چینل کہتے ہیں۔ سو ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں۔ A computer network is a group of computer system and other computing hardware devices linked together through communication channel. A network facilitates communication and resource sharing among the connected devices as shown in the figure 3.1. سو یہ فگر کے اندر ہمیں آپ کو دکھایا گیا ہے کہ ڈفرینٹ ڈیوائسز جو ہیں وہ ایک راؤٹر کے ساتھ کنیکٹ ہیں، انٹر لنکڈ ہے اور ڈفرینٹ ڈیٹا کو آپس میں شیئرنگ کر رہے ہیں۔ نیٹورک آر کنیکٹڈ ٹوگیدر ٹو میک اے لارجر نیٹورک وچ از کالڈ نیٹورک اور نیٹورکس۔ دی انٹرنیٹ از کنسیڈرڈ ایز دی موسٹ ویل ناؤن ایگزامپل آف دی نیٹورک اور نیٹورکس۔ اب اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ نیڈ آف اے کمپیوٹر نیٹورک کیا ہے، کس وجہ سے ہم اس کو یوز کرتے ہیں؟ کہتا ہے کمپیوٹر نیٹورک از اسٹیبلشڈ فار دی پرپز آف دی شیئرنگ ریسورسز، فار ایگزامپل آف ریسورسز شیئرنگ آر گیون بلو۔ سب سے پہلے فائل شیئرنگ۔ ہمیں اس کے اندر جو سب سے پہلے بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں فزیکلی ایک فائل کو دوسری جگہ موو نہیں کروانا پڑتا، ہم جسٹ ایک شیئرنگ کے ساتھ ہی ایک ڈیٹا کو، ایک فائل کو ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر کے اندر شیئر کروا دیتے ہیں۔ سو فائل شیئرنگ کے اندر کہتا ہے نیٹورکنگ آف کمپیوٹرز ہیلپس اے نیٹورک یوزر ٹو شیئر فائل۔ فار ایگزامپل if you need a data sheet of your board examination you can get the file through the internet without visiting BIS means Board of Intermediate and کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح کہتا ہے similarly BIS required your picture and your bio data for admission form. They can get all these files over a network, so the file sharing is helpful to complete the task systematically as shown in the figure 3.2. so اس فگر کے اندر آپ کو دکھایا گیا کہ آپ کی فائل جو ہے وہ ایزیلی ون ٹو another place موو کر سکتی ہے through a network۔ ایگزامپل کے اندر کہتا ہے if all your school teachers want to prepare a combined result using computers, they can share file over the school network or internet. Moreover, sharing files with the other who are living in the different cities or even countries is also much helpful, and it is done in the same way. سو اگر کوئی بندہ دوسری کنٹری میں ہے یا دوسری سٹی میں ہے سو وہ بھی ڈیٹا ایزیلی شیئر کر سکتے ہیں، فزیکلی ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو موو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی طرح ہم لوگ ہارڈ ویئر بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارڈ ویئر شیئرنگ کرنے کے لیے سب سے بیسٹ ایگزامپل جو ہے وہ پرنٹر کی ہے کہ اگر ہم لوگ 10 کمپیوٹرز استعمال کر رہے ہیں اور 10 کے ساتھ اگر الگ الگ سے پرنٹر لگائیں تو ہمیں اچھی خاصی کاسٹ پڑ سکتی ہے، لیکن اگر ہم ان 10 کمپیوٹرز کو آپس میں لنک کروا دیں اور ان کے ساتھ ایک پرنٹر جو ہے وہ انسٹال کر دیں تو 10 کے 10 کمپیوٹرز جو ہیں وہ ایک پرنٹر کے ساتھ اپنا ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں اور پرنٹ آؤٹ نکال سکتے ہیں۔ سو ہارڈ ویئر شیئرنگ کے اندر یہ آپ کو فگر کے اندر بھی ریپرزینٹ کروایا گیا ہے کہ ڈفرینٹ کمپیوٹرز جو ہیں وہ ایک سرور سے آپ اس سرور پہ اپنی ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں اور سرور آپ کو پرنٹر سے پرنٹ آؤٹ لے کر دے دیتا ہے۔ سو کہتا ہے یوزر کین شیئر ڈیوائسز سچ ایز پرنٹر، اسکینرز، سی ڈی روم ڈرائیوز، hard disk drives, etc. For example, in office, usually there are less number of printers
and scanners than available number of computers as shown in the figure 3.3. Using a network, these resources are shared to get a cost efficient solution. सो ये हमारे पास कॉस्ट एफिशिएंट सोल्यूशन होता है कि अगर अलग अलग हम कंप्यूटर्स को अलग अलग प्रिंटर देने लग गए तो हमारे पास कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस कर जाएगी. सो नेक्स्ट कहता है एप्लीकेशन शेयरिंग. एप्लीकेशन शेयरिंग के थ्रू हम लोग डिफरेंट एप्लीकेशन, एक्चुअल में ये सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है. सो एप्लीकेशन कैन बी शेयर्ड ओवर द नेटवर्क. इट मीन्स मोर देन one user may be use the same application. For example, in a bank, cashier, manager, ATM, automated teller machine जो है वो यूज़र यूज़ सेम एप्लीकेशन ओवर द नेटवर्क. बैंक बैलेंस पॉइंट इज़ अपडेटेड फॉर ऑल ब्रांचेज इमीडिएटली. सो इसी तरह आप जिस मर्ज़ी एटीएम से जाकर आप वन लिंक के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू यूज़ करते हुए अपने कार्ड से, अपने अकाउंट से पैसे विदड्रॉ करवाते हैं और उसी वक्त सेम टाइम पर ही आपके बैंक के हेड ऑफिस से ही जितने भी आपकी ब्रांचेज़ होती हैं उस बैंक की हर एक के अंदर ये चीज़ शो हो जाती है कि इस पर्सन ने इतना विदड्रॉ करवा लिया है. सो इस तरह हम डिफरेंट एप्लीकेशंस भी शेयर कर सकते हैं. फिर उसके बाद आ जाते हैं शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन. हम इंटरनेट कनेक्शन, एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शन जो है वो घर के अंदर हमने एक लगाया होता है, उसके साथ हम डिफरेंट यूज़र्स जो हैं वो एक ही नेटवर्क को इस्तेमाल करते करते हम यूज़ करते हैं. सो उसके अंदर कहता है यूजिंग अ नेटवर्क एट होम्स एट और ऑफिस वी कैन शेयर वन इंटरनेट कनेक्शन विद द मोर देन वन यूजर्स एज शोन इन द फिगर 3.1. सो ये सॉरी यहाँ पर भी आपको 3.1 के अंदर भी रिप्रेजेंट करवाया था यहाँ पर कि एक वाईफाई राउटर लगाया और उसके साथ डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं. नेक्स्ट आ जाता है यूज़र कम्युनिकेशन. नेटवर्क्स अलाउ यूज़र टू कम्युनिकेट यूजिंग ईमेल, न्यूज़ ग्रुप्स एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. सो कम्युनिकेशन विद मैनी पीपल सिटिंग अ डिफरेंट लोकेशन इज़ पॉसिबल ड्यू टू नेटवर्क. सो ये आजकल ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ये सब के सब एग्जांपल हैं यूज़र कम्युनिकेशन की कि आप घर में बैठे हैं, स्टूडेंट अपने अपने घर में बैठकर ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपना लेक्चर जो है वो ले रहा है. फिर उसके बाद आ जाते हैं इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी. सो स्टोरेज कैपेसिटी की ये एग्जांपल आती है कि अगर हमारे पास नेटवर्क्स के अंदर कंप्यूटर्स आ जाएं तो डाटा हम डिफरेंट कंप्यूटर्स में शेयर करने के बजाय, डिफरेंट कंप्यूटर्स में स्टोर करने के बजाय हम एक सिंगल लोकेशन पर डाटा रख देते हैं. जिस तरह से यूट्यूब के ऊपर अब वीडियोस का जो है वो बेशुमार डाटा पड़ा है, गूगल पर बेशुमार डाटा पड़ा है. जिसको ज़रूरत होती है वो गूगल सर्च करता है, जिसको ज़रूरत होती है वो यूट्यूब सर्च करता है और वहाँ से जो है वो इस्तेमाल कर लेता है. सो इसी तरह अब हमें अपने कंप्यूटर के अंदर जो है वो स्टोरेज की ज़रूरत नहीं पड़ी. हमने बेशुमार डाटा जो है वो एक मेन सर्वर, एक मेन कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर दिया है, जैसे यूट्यूब सर्वर, फेसबुक सर्वर, नेटवर्क सर्वर और गूगल सर्वर. तो ये डिफरेंट कंप्यूटर्स जो हैं ये हाईली कैपेसिटी, हाईली स्टोरेज के कंप्यूटर्स होते हैं और इनके अंदर हम डाटा जब शेयर करवा देते हैं, स्टोर करवा देते हैं और डिफरेंट कंप्यूटर्स नेटवर्क के थ्रू जब इन कंप्यूटर्स के साथ लिंक करते हैं तो ईज़िली वो वहाँ से डाटा शेयर कर सकते हैं. सो नेटवर्क्स की दो टाइप्स आ जाती हैं, एक है क्लाइंट सर्वर और अदर वन है पॉइंट टू पॉइंट. सो यहाँ पर हमारे पास जो डिफरेंट हमारे पास नेटवर्क की टाइप्स हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास जो आती है वो है क्लाइंट सर्वर. क्लाइंट सर्वर के अंदर हमारे पास आ जाता है एक मेन कंप्यूटर जिसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो डिफरेंट कंप्यूटर्स को फैसिलिटेट करना जानता है. उस कंप्यूटर के अंदर जिस तरह से अभी मैंने बात की यूट्यूब सर्वर की कंप्यूटर होता है. आम कंप्यूटर से ये स्पेशल कंप्यूटर होता है. नॉर्मल कंप्यूटर जो हम यूज़ करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर जिनको पीसीज कहा जाता है. लेकिन ये जो है ये सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं, ये आम कंप्यूटर्स रेगुलर यूज़ होने वाले नहीं होते. इनके अंदर जो है वो स्पेशल सॉफ्टवेयर इनके लिए बनाया जाता है. अब इसके साथ जो डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं वो सारे के सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो हमारे पास वो सर्वर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्लाइंट कंप्यूटर्स कहलाते हैं. ये मेन कंप्यूटर जो सबको फैसिलिटेट करता है, एक्चुअल में ये सर्विस प्रोवाइड करता है, दैट्स वाई इसको कहते हैं ये सर्वर कंप्यूटर है. और जो इससे फैसिलिटेट होते हैं वो सब के सब इसके क्लाइंट्स होते हैं. सो यहाँ पर क्लाइंट और सर्वर की बात की जा रही है. सबसे पहले कहता है सर्वर प्रोवाइड्स द सर्विस एंड अ क्लाइंट गेट्स दैट सर्विसेज. A client application requests some services for another application which acts as a server.
When we access a website, we get connect contents on same server, and when we provide username and password, the server verify coordinate and serves our email records. An email user is a single example of client as shown in the figure 3.6. सो इसके अंदर अब अगर मैंने यहाँ घर बैठ कर ईमेल अपनी ओपन की है, सो वो सर्वर से मुझे जब डाटा रिसीव होगा, सर वो क्या है, वो सर्वर है, वो सर्विस प्रोवाइड करेगा और मैं घर बैठ कर ईमेल अपनी रिसीव कर रहा हूँ, दैट्स वाई मैं क्लाइंट होऊंगा. अ क्लाइंट इज़ अ प्रोसेस that access a service provided by the server. For example, to check email, we use web browser as a client. The client provides the user interface to carry out action like giving username and password. A forward request to the server, which in return provides the required services. It is important to know that whether as shown in the figure 3.6, where as a cell phone, laptop and desktop computers are shown in the client, but the particular the software running on the hardware is the process which makes a client. और सर्वर क्या होता है, कहता है सर्वर इज़ अ फिजिकल कंप्यूटर डेडिकेटेड to run services on the server. The need of client of its clients depending on the service that it is running. It could be a file server, database server, printer server और अ वेब सर्वर. सो ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास सर्वर्स मौजूद होते हैं जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. सो आज के लिए इतना ही रखेंगे. इंशाल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर में हम फिज़िकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि नेटवर्क के जो है वो फिज़िकल स्ट्रक्चर क्या आते हैं. अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.